Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, in an experiment, the refractive index of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53. Calculate percentage error, express the result in terms of absolute error and percentage error. So basically यहाँ पे हमसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं. So we will first try to understand how we can calculate. So सबसे पहले to calculate the value of percentage error, we need to first calculate the mean error, right? So to calculate the mean, we can use the formula A mean, that is number of readings A1 plus A2 plus A3 and so on, divided by the number of experiment we have done or the number of reading we have taken. So let's say n reading we are taking, so dividing it with n, so we will be getting the value of A mean, यानी कि एवरेज निकालेंगे हम जितनी भी हमें रीडिंग्स मिली है उसका. ठीक है. In order to calculate the absolute error actually होता क्या है? Absolute error is the difference between true value minus measured value, right? So true value minus measured value, ठीक है ना? So this is what the absolute error is. अब इसका भी mean हम निकालेंगे. So we can say it has to be mean absolute error, and that can be written as delta am से represent होता है ये. So it will be equals to mod of delta a1 plus mod of delta a2 and so on divided by n, right? So इस तरीके से we will be calculating the value. और यहाँ पे delta जो a1 है या फिर डेल्टा a2 है, ये क्या है? बेसिकली इट इज द जैसे हमने डिस्कस किया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. सो ट्रू वैल्यू जो है बेसिकली वो तो मीन वैल्यू है, माइनस मेजर्ड वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू, दैट इज A1 A2 एंड A3 रीडिंग की. ठीक है, उसका हम मॉड ले लेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट. ऑल्सो फर्दर नाउ वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर. Relative error will be nothing but it is the ratio of mean absolute error to the mean. ठीक है. And finally if we wish to find the percentage error, we just need to multiply it with 100. So this is how we approach to the percentage error. ठीक है. So from here we can start with the question. So first of all we need to calculate the value of mean. So mean के लिए हम just add करना है हमें, or we can see how much reading we have. 1 2 3 4 5 6. So we need to divide it with 6. 1.45 plus 1.56 plus 1.54 plus 1.44 plus 1.54 plus 1.53, the whole divided by 6. 1 2 3 4 5 6. So ये जो वैल्यू हमें मिलेगी a मीन की, that comes out to be, so ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.51, which is the true value actually, right? अब इसके बाद we need to calculate the absolute error. So absolute error we can first we need to calculate delta a1. So delta a1 क्या मिलेगा हमें? delta a1 will be equals to 1.51 minus of a1, that is 1.45, which is equals to 0.06, right? We need to be careful. We will have to take the mod, right? So just हमें कोई नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है. a2 को हम क्या लिखेंगे? 1.51 minus of 1.56, so this value comes out to be 0.005. यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे हैं. a3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.51 minus of 1.54, so this value comes out to be 0.03. and mod of a4 क्या आएगा हमारे पास? 1.51 minus of 1.44, so this value comes out to be 0.07. mean absolute absolute error 5 के लिए हम लिखेंगे 1.51 minus of 1.54, that is 0.03. and mod of finally 6, we have 1.51 minus of 1.53, that is 0.02.
अब इन सबको ऐड करके जस्ट वी नीड टू डिवाइडेड विद 6 एंड वी विल बी गेटिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर. देयरफॉर फाइनली हम क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करने पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा 0.26 divided by 6, it comes out to be 0.0433. So up to second decimal place we have the answer, so we will take up to second decimal place. So ये हमें मिल गया 0.04. अब we have with us the absolute error and now we are interested in calculating percentage error. So उसके लिए हम पहले relative error निकाल लेंगे. So we can say therefore now relative error, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा am that is 0.04 divided by am हमें मिला है 1.51. so this answer comes out to be 0.026. अब ये जो 6 है it is at the third decimal place and it is greater than 5, so it will carry forward वो 2 को एक देके it will be we can write this value as to be 0.03, right? So finally we can have the percentage error, that will be just we need to multiply this ratio, that is relative error, into 100, so this answer comes out to be 3%. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.